हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इस क्लास में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट एंड योर ऑल द फॉर्मूलास वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो स्टूडेंट इसमें बने रहें, ओके, एंड वीडियो को पूरा वॉच करें। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक बार ये पूरे कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएंगे, मींस मे बी बाय टुडे इट विल बी कंप्लीटेड। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द टू सॉल्व क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सो उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, आपको चैनल में बने रहना है। मैं अभी आपको आगे बहुत सी चीजें बताने वाला हूँ जिससे कि आपका मैथ बहुत इजी हो जाएगा। ओके, एंड यू विल एबल टू सॉल्व इजली मैथ, और आप इजली 75 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं मैथ में, 75 प्लस मार्क्स। ओके, so our chapter 3 is pair of linear equation in two variables. Standard form of linear equation, we know that a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. After that, our first thing, these are standard forms where a1 is the coefficient of x, b1 is coefficient of y, and c1 is constant. Same thing is for the second equation, or this we can say equations of line. Okay. So next, first work is in chapter this pair of linear equation, graphically finding the values of x and y. We can check by this if lines are intersecting. Lines are intersecting, it means it is consistent or unique solutions. Second, checking lines are coincident, consistent, or infinitely many solutions. Third, checking lines are parallel or inconsistent or no solution but graphically. Okay. अभी यहाँ पे बच्चों हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, तो आप इनको एक बार अगर अपने नोटबुक में लिख सकते हैं सो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ओके, और अदरवाइज मैंने इस पूरे पीडीएफ का टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हुआ है, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बच्चों, और आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो पहले तो हमने ग्राफिकली मेथड देखा, अब algebraic methods, if we have two equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, or a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So if a1 by a2 not equal to b1 by b2, then what we say, it is the unique solution or intersecting lines or consistent. Okay, so always remember a1 by a2 not equal to b1 by b2. It is unique solution or intersecting lines or consistent. Second condition, if a1 by a2 is equal to b1 by b2 and it is also equal to c1 by c2. So in this case, all three are equal. So what does it mean? It means these are infinitely many solution, coincident lines or consistent. Okay. Third, if a1 by a2 equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, so it is no solution or parallel line, no solution or parallel lines or inconsistent. ओके प्यारे बच्चों, अभी आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अब इसमें हमको आगे क्या देखना है, एलिमिनेशन मेथड। ओके, सो एलिमिनेशन मेथड में हमारा क्या वर्क होता है, वी हैव टू एलिमिनेट एनी वन वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, एक्स और वाई। ओके, suppose we have to eliminate x, you have to eliminate the x from your means both equation which are given. So what you will do, so multiply x you have to do, so multiply equation first by coefficient of x of equation second वाले इक्वेशन का जो कोफिशिएंट होगा x का, उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। और फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है इसलिए हियर आई एम एक्सप्लेनिंग, एंड फर्स्ट इक्वेशन में जो x का वो कोफिशिएंट है, आप उस
आप उसको इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड उसके बाद आप इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर देंगे, तो आपका आ जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ y। किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसको किस में पुट कर दोगे? किसी भी एक इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यू विल गेट वैल्यू ऑफ x आल्सो। ओके, नाउ सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। Okay, in substitution method, what for finding the value of x, what you will do? पहले तो आप पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। मीन्स सपोज आपके पास कोई एक वैल्यू है x प्लस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे 2x प्लस सेवन वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये सेकंड। तो आप क्या करेंगे इसमें? पहले यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं या तो आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो प्लस थ्री तो माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस एक्स। दिस वैल्यू यू विल पुट इन इक्वेशन सेकेंड, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। अगर आप सेकेंड से वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर आप सेकेंड से वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप उसको वन में पुट करेंगे, ठीक है। और वन से आपने फाइंड किया तो उसको सेकेंड में पुट करेंगे। सो आपको दूसरा जो x वेरिएबल है वो भी मिल जाएगा। आफ्टर दैट यू विल गेट योर आंसर। ओके, हाँ, नेक्स्ट थिंग, मोर फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे और किस फॉर्मूले के यूज हो रहे हैं इस चैप्टर में? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास जब वी आर जस्ट कंप्लीटिंग all the concept or all the formula one time. After that we will start to solve the questions. So don't forget to subscribe the channel, and if you like, so like it and share with your friends so they can also get the benefit. Okay, standard form of quadratic equation. So what is quadratic equation? Ax square plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0. To solve any quadratic equation, we have two methods, factorization method and quadratic formula. This quadratic formula is also known as Ramanujarya formula. Okay. What is the formula? X is equal to minus b plus minus root over b square minus 4ac upon 2a. Here you have to remember it. If your equation is this, ax square plus bx plus c is equal to 0. So a is the coefficient of x square, b is coefficient of x, and c is equal to 0. Okay. Next, third. Now means इस chapter में quadratic equation में you have to check also discrimination or nature of roots. Always one question is coming from this topic. Okay, always it is covering one question in exam. Always it is asking in every board exam. So if b square minus 4ac is greater than 0, when you will put the values of b, a and c, and if it is value is greater than 0, so you will say it has two distinct real roots. Second one, if b square minus 4ac is equal to 0, when you will put value and you will get this b square minus 4ac equal to 0, so you will say two equal real roots. Third, if b square minus 4ac value you will put, so means any negative value you have get. So negative value means it is less than 0. So in this case there is no solution or no roots. Okay. बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें आप, और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट हो जाए, है ना। ठीक है, ये मैंने इसकी जो आपकी पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की हुई है, और उसका लिंक मैं आपको भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्पीड इन अप स्ट्रीम। ओके, जब भी आपको स्पीड निकालनी है अप स्ट्रीम में तो कैसे निकालेंगे? x माइनस वाई। व्हाट इज x? x इज द स्पीड ऑफ बोट। ओके, x इज द स्पीड ऑफ बोट। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई। एंड सपोज यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, फाइंड द टू डिजिट नंबर। सो उस कंडीशन में आपको क्या लेट करना है? लेट वंस डिजिट बी वाई एंड टेंस डिजिट बी एक्स। तो टेंस डिजिट एक्स है तो ओरिजिनल नंबर क्या फॉर्म हो जाएगा आपका? 10x प्लस वाई। ओके, नाउ अगर कभी सपोज करो इफ एनी वैल्यू इज गिवन किलोमीटर पर आवर and you have to change in meter per second, so how will you do? You will multiply that value 5 by 18.
or if meter per second is given and you have to convert in kilometer per hour, so you will multiply by 8 by 15. Okay, next, arithmetic progression. Our chapter 5 is arithmetic progression. We are going to learn all the formula and the concept of this chapter, arithmetic progression. Okay, AP. So our first term is A. First term, how we we present A, okay, or how we denote by A. Common difference is D, and D how we will find second term minus first term. Okay. Now AP, any AP we have to form. What will be your AP? It is A means first term, A plus common difference second term, A plus 2D third term, A plus 3D fourth term, A plus 4D फिफ्थ टर्म. तो आप इस सब में एक चीज देख रहे होंगे कि अगर हम सेकेंड टर्म है तो डी की 1D है, थर्ड टर्म 2 है, फिर फोर्थ टर्म 3 है. ओके, सो बच्चों ऐसे आप याद रखेंगे. ओके, हाँ. देन nth टर्म फॉर्मूला, an is equal to a plus n minus 1 into d, where n is the number of terms. लास्ट टर्म का भी सेम फॉर्मूला है, an की जगह पे हमको क्या पुट कर देना है, l. so l is equal to a plus n minus 1 into d. Okay, next formula is, if suppose three terms are given, the A, B, C, and these are three consecutive terms of an AP. So B is equal to A plus C by 2. मतलब आपको if in question it will say prove that these three terms are in AP. So आपको बस ये prove करना है कि जो middle term है, B term है, it is the average of first and third term A plus C upon 2. Okay, students. Sum of n terms of AP. So sum of n terms of AP, we have formula Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. And if last term is given, then Sn is equal to n by 2, a plus l. आफ्टर दैट सम ऑफ फर्स्ट टर्म. एक क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक में, सम फॉर फाइंडिंग द सम of first two terms and then sum find the values of terms. Okay, so first term का जो sum होता है that is S1 and that will equal to the your first term only, sum of first two terms. So S2 is equal to फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म. कई बच्चे क्या करते हैं सीधा सेकेंड टर्म लिख देते हैं S2 इक्वल टू A2. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों, है ना. आपको याद रखना है कि S2 मतलब टू टर्म्स का सम A प्लस A2. सपोज आप S3 फाइंड कर रहे हैं, थ्री टर्म्स का सम, तो उस कंडीशन में आपको A प्लस A2 प्लस A3, ये थ्री टर्म्स का सम है, फर्स्ट थ्री टर्म्स का. ओके, now let's go for the next chapter, triangles. Okay, similarity of triangles. If ABC and PQR are two similar triangle, when we can say that these are similar, when this angle A is equal to angle P and angle B is equal to angle Q. Okay, and this angle C is equal to angle R. So when these all three angles are equal, corresponding angles, okay. And second condition is if their corresponding sides are equal in ratio or in same proportion. Means a what are corresponding side? This corresponding, this AB is corresponding to PQ, BC is corresponding to QR, AC is corresponding to this PR. So AB by PQ is equal to BC by QR is equal to AC by PR. Okay. सो बच्चों हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम. इसमें आपको और क्या याद रखना है, फर्स्ट आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम याद रखना है. दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज इट इज आस्किंग इन एग्जाम, यू कैन राइट इट 5 स्टार. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, very important, very easy. Okay, here we are not going to solve, we will just see, because after that when we will start to solve all the questions in next class, so that in if this question will come most means it, so we will solve it. Okay, so basic proportionality theorem, or it is also known as Thales theorem. What it says that
if a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. Okay, means if you have any triangle ABC and PQ line is parallel to the BC, then you will prove it AP by, then you will prove it AP by BQ is a AP by BP is equal to AQ by QC. AP by BP is equal to AQ by QC. बच्चों अगर थोड़ा कुछ लैक हो रहा है तो आपको कमेंट करके बताना है. ओके, आई विल ट्राई टू मोर इम्प्रूव. हाँ, नेक्स्ट वन, converts of basic proportionality theorem. If a line divides any two sides of a triangle in same ratio, then the line is parallel to the third side. Means if you have any triangle ABC and it is given that AD upon DB is equal to AE upon EC. So in this case, what we have to prove? We have to prove that DE is parallel to BC. Now we will see criteria of similarity of triangles. So in this chapter we have three criteria for similarity of triangles. The AAA angle criterion AAA. Okay, also referred to as AA similarity. Means by this AA similarity only in our exercises we are solving most of the questions by AA similarity. So you have to remember it. If any two triangle corresponding angles are equal, any two corresponding angles are equal, then also that triangles will be similar. Triple S, side criteria. Okay, SAS, side angle side criteria. Okay, next chapter is coordinate geometry. So in coordinate geometry, what are the important formula we are going to discuss? Okay, students. So the keep act means you have to active. So A, B, if two points and you have to find the distance between them. So we will use the distance formula is root over x2 minus x1 plus y2 minus y1. A coordinate is x1 y1, b coordinate x2 y2. Okay, so distance formula will be root over x2 minus x1 plus y2 minus y1. Next one, if now section formula. Okay, m1 a p sub a p. So प्यारे बच्चों, here we are going to see the section formula. Okay, suppose you have here 2 points A and B. You have 2 points A and B. You have 2 points A and B, and points are like x1 comma y1 and B is x2 comma y2, and there is any point P. Suppose its coordinates are x and y, and this point P is dividing this line in two ratios like m1 and m2. So how we will find the this coordinate points, or sometime it say to find the ratios also. Coordinates it is given, so it is means this is the only formula which you have to use it. Xy is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. सो बच्चों देखो, इसमें जब आप m1 लिख रहे हैं तो आपको x2 लिखना है, 2 के साथ 1 लिखना है, 1 के साथ 2 लिखना है, एंड 2 के साथ 1 लिखना है. ओके, सो बाय दिस यू कैन रिमेम्बर इट. Second, now to prove the given figure is a square, what you have to do, all sides are equal and diagonals are also equal. This you have to prove it for is proving the square. Second, rectangle, opposite sides in rectangle, what you have to prove, opposite sides and diagonals are equal. Means if any rectangle is given, its rectangle is A, B, C, D, and you have to prove it is rectangle, or you have to check it. So what you will prove? You will prove opposite sides are equal, and this opposite sides are equal, and the diagonals are also equal. Means आपको ये proof करना होगा AB is equal to CD and
AB is equal to CD and AD is equal to BC, and diagonals are also equal, means AC is equal to BD. Okay. Now for proving the parallelogram. So for parallelogram, what you will do? Opposite sides are equal and diagonals are not equal. Suppose ABCD is a parallelogram and you have to prove it. ABCD opposite sides. Okay, so this side you will prove equal, and this side are equal, and you have to check the diagonals also. Diagonals should not equal. If diagonals will equal, so it will become the rectangle. So diagonals should not equal, means AC should not equal to BD. Rest things could be equal, like AB is equal to CD and AD is equal to BC. This okay. Now rhombus. In rhombus, what you have to prove? You have to prove it all sides are equal and diagonals are not equal. Like rhombus is what? Tilted shape of square. So here all sides are equal. In square, what you have to prove? All sides are equal and diagonals are also equal. In rhombus, you will prove like all sides are equal. AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. But and you will prove diagonals, means AC is not equal to BD. AC is not equal to BD. ये आपको प्रूफ करना है रोम्बस के लिए, ठीक है. Third thing, in parallelogram, suppose you have any parallelogram ABCD where ABCD is given A 6, 1, x1 y1, x2 y2, x3 y3, and the P, 3 or x4 y4 it is given, and you have to find the value of P. इसलिए मैंने आपको explain करने के लिए यहाँ पे एक example लिया हुआ है. 6, 1, 8, 2, 9, 4, x, P, 3. आपको suppose इस condition आपको P की value find करना है. So in parallelogram we know that, what do we know? That diagonals of a parallelogram bisect each other. So midpoint of when they are bisecting each other, so midpoint of AC means here, suppose any midpoint is there. Here, suppose its midpoint is what? Its midpoint will be here. So midpoint of AC will is equal to the midpoint of BD. A midpoint का formula हमने पढ़ा हुआ है बच्चों. What is the midpoint formula? Is x1 प्लस x3. जो डायगोनल्स ले रहे हैं ना बच्चे, तो इस डायगोनल में लेना है आपको. सो x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2. सेम थिंग यहाँ पे x2 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 2 एंड y2 प्लस y4 डिवाइडेड बाई 2. इसमें जो वैल्यूज गिवन है आप उस वैल्यूज को पुट कर देंगे, यू विल गेट योर आंसर. वैल्यूज पुट करने के बाद देयर इज वन मोर थिंग. अगर आपको इसमें कंपेयर करना होता है x टू x एंड y टू y, यू विल कंपेयर. पॉइंट ऑन x एक्सिस, अगर कोई पॉइंट है x एक्सिस में तो उसका y क्या होता है? 0 होता है. एंड x एक्सिस इज आल्सो नोन एज एबेसिसा. ओके, एंड y इज नोन एज ऑर्डिनेट. ओके, ऑर्डिनेट, and x is known as abscissa. Abscissa. Okay. ओके बच्चों, आज की अभी इस क्लास में इतना ही. बाकी का हम अभी जो आगे के फॉर्मूला बच्चे हुए हैं उसको भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके, एंड उसके बाद हम बच्चे यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं पूरे के पूरे क्वेश्चंस. अगर आप लास्ट तक आ गए तो डेफिनेटली एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस की. मोस्ट ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ CBSE. ओके, थैंक यू बच्चों.